Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on Hornbill TV. The upcoming Ranji Trophy match between Tripura and Mumbai set to begin on October 26 at the MBB Cricket Stadium in Agartala faces uncertainty due to the adverse weather conditions brought on by tropical cyclone Dana. While the star-studded Mumbai team led by Indian cricketer Ajinkya Rahane arrived in Agartala and completed their Thursday morning practice session, the weather took a sudden turn for the worse in the afternoon. Tripura's first match in the group stage had already been called off due to unsuitable ground conditions. However, the team secured an emphatic win against Meghalaya in their second match, raising the confidence under the captaincy of Mandeep Singh. Tripura, a small northeastern state, has shown remarkable improvement in domestic cricket, highlighted by their 148-run victory over defending champions Saurashtra last year. Despite Tripura's growing strength, Mumbai is still regarded as one of the top teams in Indian domestic cricket, with several players having international experience. However, the match is now under threat from the inclement weather. After Mumbai's practice session, the ground was covered to protect it from rain. Tripura Cricket Association TCA Secretary Subrata De assured the media that the staff is working tirelessly to maintain suitable ground conditions for the match. Security measures have also been intensified given the presence of several high-profile players on the Mumbai team. A senior police official confirmed that security had been heightened, and the additional SP of West Tripura district inspected the ground earlier to ensure the arrangements were made in place. In a move to encourage spectators, the TCA has announced that no tickets will be required for the match, scheduled to begin on October 26. However, with the looming threat of cyclone-induced weather, the fate of the much-anticipated game remains uncertain. প্রস্তুত আগামী ম্যাচের জন্য আমাদের সমস্ত গ্রাউন্ড স্টাফ, আমাদের সমস্ত অফিস বিএলআর থেকে শুরু করে সবাই জেনারেল বডি মেম্বার, দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা গ্রাউন্ড কমিটিতে আছে, কনভেনার থেকে শুরু করে অন্যান্য সদস্য, সবাই মিলে কালকে সকাল থেকেই একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, একদিকে এই ঘূর্ণিঝড়ের একটা সংকেত, আবহাওয়া দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা একটা প্রভাব রয়েছে এখনো। তা আমরা সার্বিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি, যে কোনো মূল্যে 26 তারিখ রঞ্জি ত্রিপুরা ভার্সেস মুম্বাই খেলা আমরা করাবই। পুরো মাঠেই কভার করা হয়েছে, দেখতে পাওয়া পুরো যাচ্ছে। মাঠ কভার করা হয়েছে। আমাদের গ্রাউন্ড স্টাফরা কালকে রাত্রে 9টা অবধি কাজ করেছে, হ্যাঁ, সকাল থেকে। এবং আমরা অনেক আমাদের সমস্ত এর জন্য আমরা অনেক কিছু স্পেশালি আমরা এক্সট্রা অনেক এফোর্ট আমরা দিয়েছি। নর্মাল যেগুলি আছে তার বাইরে থেকে আমরা কিছু স্পেশাল এফোর্ট নিয়েছি, যে কোনো অবস্থায় আমরা রিস্ক নিতে রাজি। ত্রিপুরা দলের কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে মুম্বাইকে হারানোর? আমরা তো অত্যন্ত আশাবাদী। আমরা তো লাস্ট মেঘালয়ে আমরা যে পারফরমেন্স আমরা দেখিয়েছি, আমরা আশাবাদী আমরা মুম্বাইকেও চ্যালেঞ্জ দিতে পারবো। চার প্লেয়াররা এসছে, নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা কিরকম থাকবে খেলার দেশে? না, আমাদের স্টাফ থাকবে, সবগুলি গেট কাভার করে আমাদের স্টাফরা থাকবে, প্লাস হোটেলের ওরা থাকছে, হোটেলের কাভার থাকবে। ওভারঅল সব মিলিয়ে আমরা একটা সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি, সেই অনুযায়ী ডেভেলপমেন্ট থাকবে যথেষ্ট। In a bid to improve connectivity in the northeast, the Ministry of Rural Development has sanctioned 55.89 kilometers rural roads in Nagaland and 782.155 kilometer rural roads in Meghalaya under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY3. For Meghalaya, 88 roads measuring 782.155 km and 55 bridges have been approved under the third phase of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY with an estimated investment of 1,056.82 crore. The centre had earlier sanctioned 55 roads of 443.26 km with an estimated investment of rupees 412.34 crore for Meghalaya under BMGSY3. An estimated cost of rupees 54.75 crore has been sanctioned for Nagaland with an aim to further integrate remote areas with essential infrastructure and services contributing to the region's overall development. Previously, 40 roads covering 506.69 kilometers had already been approved under PMGSY3 involving an investment of rupees 489.70 crore.
A memorandum of understanding for the State Bank of India police salary package was signed between the Manipur police and SBI on Thursday, marking a significant step towards providing enhanced financial services to police personnel in the state. The signing ceremony took place at the office of the Director General of Police, Manipur. The MOU was signed by Konsam Jayanta, IGP Administration, on behalf of the Manipur Police, and Kumukcham Okendra Singh, Regional Manager, State Bank of India, Regional Business Office, Imphal, on behalf of SBI. The event was held in the presence of Rajit Singh, Director General of Police, Manipur, along with other senior officers from the Manipur Police and senior officials from SBI. The agreement aims to offer a range of benefits to the police personnel, including special salary packages, various insurance benefits, including personal accident death insurance up to 1 crore and additional coverage up to rupees 10 lakh, among other benefits. Outstanding benefits to family members of police family members, other benefits and more, further strengthening the relationship between the police department and SBI. The Union Government has officially approved the appointment of Justice Sanjeev Khanna as the next Chief Justice of India. Justice Khanna, who currently serves as the first puissant judge at the Supreme Court, is set to assume the position on November 11 following the retirement of the incumbent CJI D.Y. Chandrachud. CJI Chandrachud had previously recommended Justice Khanna's name for the role, adhering to established norms for such appointments. This transition marks a significant moment in the Indian judiciary as Justice Khanna prepares to take the helm. Justice Sanjeev Khanna will take oath on November 11, a day after incumbent Justice D.Y. Chandrachud demits office on attaining the age of 65. Justice Chandrachud took over as the CJI on November 8, 2022. Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal announced the news via X, formerly Twitter, confirming the government's endorsement of Justice Khanna's appointment. Union Minister of State Road Transport and Highways Ajay Damta on Thursday said that the centre is spending a whopping sum of rupees 12,500 crore for developing road infrastructure in Tripura. Briefing the media persons during his maiden visit with the new charge of office, he said the total length of national highway in Tripura stands at 793 kilometers, out of which 750 kilometers is managed by the NHIDCL. The State Public Works Department has 43 kilometers under its control. In the recent past, the centre has approved road infrastructure projects worth rupees 12,500 crore. Sharing details of the projects, he said a total of 664 kilometers of national highway is being laid all over the state in phases. Already works are underway in 15 projects with a cumulative 362-kilometer road in different parts of the state. Among the important projects, 36 kilometers stretch in National Highway 208 is being constructed with an expenditure of rupees 787 crore. Rupees 921 crore is being spent for expansion of road in the Kayarpur stretch. Apart from that, the DPR is being prepared for expanding the existing 79-kilometer stretch of Churapari-Agartala National Highway into a 4-lane road. According to the minister, the centre is considering to hike CIRF funds for Tripura from rupees 35 crore to rupees 100 crore, considering the impact of floods. मेरे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का एक ही एनएच था, एक ही रोड को हम एनएच करके बुलाते थे। आज ये 6 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर हमारे निर्माण है और सब हमारे NHIDCL, हमारे ईडी बैठे यहाँ पर अजय बिश्नोई जी, ये लगातार इनकी टीम यहाँ देख रही है, केंद्र से भी हम लगातार देख रहे हैं। तो ये 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिससे कि यहाँ का त्रिपुरा का रोड नेटवर्क एक अपने आप में अद्भुत बनता जा रहा है और भी हम लोग आगे उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। त्रिपुरा को दक्षिणी पूर्व एशिया का प्रमुख द्वार बनाए जाने के लिए भी राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे लिंकिंग की कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे हमारा व्यापार है, पर्यटन है, स्थानीय रोजगार वो बढ़ेगा। NH8 जो कि 371 किलोमीटर का है, जो कि आसाम के करीमगंज के त्रिपुरा से सबरूम तक को जोड़ता है, ये भी त्रिपुरा के लिए एक बहुत बड़ा जीवन रेखा है
जिससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी है उसके माध्यम से हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को एक ताकत मिल रही है, जिससे नए व्यापार के आने वाले स्रोत को ताकत मिलेगी। त्रिपुरा जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पाद है, क्योंकि रबड़ का मैं आज कई प्लांटेशन में अभी भी गया था, कल भी मैं कुछ जाने वाला हूँ। अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर रबड़ का प्रोडक्शन पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे है अपने आप में। जहाँ हम बात करते हैं रबड़ की, तो उसकी भी आने वाले समय के अंदर जो इंडस्ट्री है, रोजगार है, वो बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भी हमको थोड़ी बहुत समस्याएं यहाँ रहती थी, तो आज हमारे लगातार प्रवास के बाद, बातचीत के बाद, जो हमको रोड बनाने के लिए हमको जमीनें चाहिए, चाहे फॉरेस्ट लैंड है, एनपीपी का पैसा जमा करता है, रोड के लिए डेवलपमेंट के लिए पेड़ हटाने पड़ते हैं, और जो पब्लिक की जमीन रहती है, जो लोगों की नाप जमीन रहती है, उसके लिए भी हमारा भूमि। Disengagement of troops of India and China has started at two friction points in Temjok and Depsang Plains in the eastern Ladakh sector, defense officials said. As per the agreements between the two sides, the Indian troops have started pulling back equipment to rear locations in the respective areas, they said. On October 21st, India announced that it reached an agreement with China on patrolling along the line of actual control in eastern Ladakh, ending the over 4-year-long military standoff. Speaking at an event in New Delhi on October 24, Defence Minister Rajnath Singh said the two countries had reached a consensus to restore the ground situation based on the principles of equal and mutual security. He added that this includes restoration of patrolling and grazing to traditional areas. Singh attributed the progress in ties to the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. On Wednesday, Prime Minister Narendra Modi met with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the BRICS summit in Russia and welcomed the agreement reached between the two countries on patrolling arrangements along the LAC in eastern Ladakh. Prime Minister Modi said that maintaining peace and stability on the border should remain a priority of the two countries and mutual trust should remain the basis of bilateral ties. The Prime Minister said that India-China relationship is important not only for the people of the two countries but also for global peace, stability and progress. The border standoff between India and China began in eastern Ladakh along the LAC in 2020, sparked by Chinese military actions. This incident led to prolonged tensions between the two nations, significantly straining their relations. Launching a scathing attack on the ruling allied Tripura Mota Party, Tripura leader of opposition Jitendra Chaudhary on Thursday alleged that the principal opposition party had to shift their venue of Ramchandra Tart local committee meeting after supporters of ruling Tripura Mota Party stopped the organizers from holding the meeting. Later, the conference venue was shifted. Speaking on the issue, leader of opposition Jitendra Chaudhary said when everything was almost ready, some people of Tripura Mota Party came and said the meeting cannot be held and that now Tripura Mota is the only political power that deserves to exist here. আমি বলছি না, তাদের দলের লোকরা বলছেন সেখান থেকে কারা কারা লাভবান হচ্ছে। তো এগুলো ধরা পড়ছে, মানুষ প্রশ্ন করছে, আঙ্গুল তুলছে, সেই ক্র্যাশ এখন নেই। এটা তো আর্তনাদ, না আর্তনাদ, এখন আবল তাবল বলছে। এটা আর্তনাদ যে আগামী দিনে যে আজকে এইভাবে যে কিছু রোজগার হচ্ছে, এই রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে হলো মানুষ যে ভালোবাসা দিয়েছে, ভক্তি দিয়েছে, আগামী দিন তার বিপরীত তিনি আশঙ্কা করছেন। তার থেকেই তার এই প্রলাপের কোনো অর্থ হয়। খোয়াইতে আপনার সফরে আসার মূল কারণ কি রয়েছে? আমার আজকে খোয়াইয়ে আসার মূল হলো আমাদের পার্টির এই 24তম পার্টি কংগ্রেস তথা মহাসম্মেলনকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশের যে পার্টির সমস্ত শাখা প্রশাখা সম্মেলন হচ্ছে, আমাদের রাজ্যেও আগামী জানুয়ারি 2025-এর শেষে রাজ্য সম্মেলন হবে। তার আগে আমাদের সমস্ত শাখা এবং লোকাল, তারপর মহকুমা, জেলা সম্মেলন হবে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে রামচন্দ্র ঘাট যে আমাদের অঞ্চল কমিটি, তার সম্মেলন তারিখ রামচন্দ্র ঘাটই হওয়ার কথা ছিল।
সমস্ত প্রস্তুতি তৈরি। Congress candidate Tanzil Hussain on Thursday formally filed his nomination papers from Samaguri Assembly constituency in Assam's Nagaon before the district commissioner and election returning officer in the presence of MP Rakipul Hussain, MP Gaurav Gogoi, APCC President Bhupen Bora, CLP leader Dibar Rata Saikia and MLAs. Congress candidate Tanzil Hussain is son of Dubri Lok Sabha MP Rakipul Hussain. The last day of filing nominations is Friday, while scrutiny will be done on October 28 and the last date of withdrawal is October 30. By-elections in Assam will be held on November 13 in 5 assembly constituencies. Of the sitting MLAs were elected to the Lok Sabha earlier this year. 9 candidates on Thursday filed their nomination papers for polls to 5 assembly seats in Assam. An official statement said 4 candidates submitted their papers for the Dulai Assembly constituency, while 2 each filed the documents for Bugaigaon and Samaguri. 1 candidate filed the nomination for Sidli. No candidate filed the nominations for the Behali constituency. The total number of nominations filed has so far reached 14. Assam CM and Jharkhand BJP co-in-charge of assembly elections Himanta Biswa Sarma on Friday slamming the Congress party and said that earlier he was in Congress and there is the system in the Congress where they sell 20% of tickets and use their money in the election. Sarma further stated that the NDA will get even stronger in the days to come and they are contesting election very well. सुदेश महातो जी नामांकन दे रहे, थोड़ा देर उनका साथ रहूंगा, फिर शाम को एक बार सरायकिला में भी जाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है, लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैं गुंडा हूँ तो ठीक है भाई, हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है। नहीं, कैंडिडेट मिल जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजी होता है, जैसे विपक्ष ने जामा में कैंडिडेट नहीं दिया है, विपक्ष ने भी तो अभी तक सरायकिला में कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, काल हुआ है, काल ही तो हुआ है ना, हमारा भी हो जाएगा। और आप थोड़ा खबर करिए, हमारा कैंडिडेट काम कर ही रहा है, कोई मतलब ये नहीं है। हमें टुंडी और बरहट एक साथ दे दूंगा। बरहट एक्चुअली बरहट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कंफर्म है। टुंडी के लिए थोड़ा सा आंसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है। आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो टुंडी के लिए बरहट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। पहले वो लोग बोलते थे बीजेपी में वो चला गया, लेकिन 2 दिन में ही तो हकीकत आपका सामने आ गया। हमारा गठबंधन तो पक्का है ना, हमारा यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई लोग जाने का बात था, वो भी मन गया है। हमारा तो ठीक ठाक रहेगा। चुनाव विड्रॉयल का समय तक आप देखेगा कि हमारा पार्ट एनडीए बहुत ही स्ट्रांग होके उभरेगा और हम लोग का पूरा समझन है, वार्तालाप भी चल रहा है और हम लोग अच्छा से चुनाव। Inviting German businesses to invest in the country, Prime Minister Narendra Modi on Friday said there is no better place for investment than India and this is the right time to join the country's growth story. Addressing the 18th Asia Pacific Conference of German Businesses 2024, the Prime Minister emphasized that the time was right for foreign investors to participate in India's growth story, join Make in India initiative and Make for the World. He also said when India's dynamism and Germany's precision meet, when Germany's engineering and India's innovation meet, and when Germany's technology and India's talent meet, it ensures a better future for the world, including the Indo-Pacific. भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है, जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी
और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। साथियों, आप बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हैं। आपका तो मंत्र होता है, व्हेन वी मीट वी मीन बिजनेस। लेकिन भारत आना सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता। भारत के कल्चर, कुजीन और शॉपिंग को आपने समय नहीं दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यू विल बी हैप्पी एंड बैक होम योर फैमिली विल बी हैप्पियर। आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। बीती सदी में डेवलपमेंट को मुख्यतः नेचुरल रिसोर्सेज ने गति दी थी। 21st सेंचुरी को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इनोवेशंस गति देने वाले हैं। इसलिए भारत अपने यूथ की स्किल्स और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन पर बहुत फोकस कर रहा है। साथियों, भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए आज काम कर रहा है। हमारा मिशन एआई हो, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन क्वांटम हो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो, डिजिटल इंडिया का मिशन हो, इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान देना है। Meanwhile, German Chancellor Olaf Scholz said that overall message is clear: need more cooperation, not less. Globalization has been and remains a tremendous success story for all the nations. Around 1 billion people in developing and middle-income countries alone have joined the middle class and thanks to global value chains, cross-border investment and economic cooperation. The overall message is clear: we need more cooperation, not less. Globalization has been and remains a tremendous success story for all of our nations. Around 1 billion people in developing and middle-income countries alone have joined the middle class thanks to global value chains, cross-border investments and economic cooperation. Many countries in the Asia-Pacific region are perfect examples here. This is why I keep telling the proponents of deglobalization and decoupling, or whatever the protectionist policies are being called these days, let's be careful. In the short term, those concepts may sound tempting, but ultimately they lead to weaker growth, higher prices, lower global prosperity and less competition, which in turn means less innovation. We need to take a different approach, one that I would like to call being open without being naive. Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. Every week an aircraft from the Airbus A320 family is being delivered from my hometown, Hamburg, to India's booming airlines. And for Germany's Lufthansa, India. That's all we have for now. Keep watching Hornbill.